Give him a big applause. Thank you so much for cricket. I have to angle the camera. Welcome Glenn Bay and Cameron Akbal to San Francisco Bay Area. And I'm sure you all know them, but I would like to have this opportunity to show you some video clips about these two gentlemen that have served the game of cricket like none others. So if I can have Omar, can you hit it, please? So as you saw, Glenn is not only committed to cricket, but also committed to the humanity. I think after his retirement,
He has made up his mind to help as many as cricketers possible in the world, and also as many as human possible in the world to make their life easier. I just want to share a little story that yesterday. This gentleman is so good. As you know, that he had helped a lot of bowlers in the world to help them either correct their action or whatever the deficiencies they had. Yesterday, we had a young kid who bowled like 5 deliveries, and both of these gentlemen picked up what was the deficiency in that young man's bowling. It took them only 15 minutes working with the young man. And we have a video proof of correcting the youngster's action in 15 minutes. Never heard it. Never heard it. So give them applause for that. That's a commendable effort. And what I saw yesterday, they have the eye, they have the mind, and they have the skill to help any youngsters, either here in the U.S. or across the globe. So, having said that, I want to have a small video. Bear with me, and I think you guys are going to really enjoy it. Another legend of cricket, what he said about Square Mustaq. Pakistan for 3 years. I'm telling you a story. In 1996 or 95, I played for PI. PI stands for Pakistan International Airlines. They have a first-class team. I was the captain. And there was a one-day game, a big semi-final final, if I remember clearly. They were playing there when I was a captain. I hardly used to play for PI at the time because I was in Pakistan cricket team. So that game I was playing, it was a big game and I was playing. Playing there was a guy called Shafiqkhanyoutubetv. Obviously cricket is around me and told me about Shafiqkhanyoutubetv, that he is very special, very rare. I thought he's just like upcoming off spinner. I never saw him ball before that. So when he came into bowl, that was I think in about 11 to 12 over. The first over he pulled a normal off spinner. I said, okay, his length is right, his pace is good, his variation has been excellent in the first 2 or 3 overs. And then he pulled this magical ball called Dusra. Dusra is the ball that goes away from the right hander opposed to touching to the right hander with extra bounce. I thought that would be a fluke because I've seen a lot of off spinners in my time of playing against a lot of off spinners. The best one as well. This guy was something very, very special, I thought to myself. And then after about 2 weeks, we were told to Sharjah with Pakistan team to play in Australia. And maybe England at the time, 14 were playing there. So he picked him. I know I had one select as he had a good first-class season, so we picked him in 16. And then we went to Sharjah. And that bowler pulled basically well in that particular game, got 5-6 wickets. Then it was everyone with wickets. I've seen the top batsmen in the world like Brian Lara, Sachin Tendulkar, Ricky Ponting, Gilchrist, all these top players were struggling against him. They couldn't pick his shot. So he was very, very special. And since that particular night from 96 onwards, he became the main part of Pakistan playing there. He won so many games for Pakistan, particularly one test series in India against India in 1999. But India after 10 years, it was a very politically sort of problematic tour. But Shafiqkhanyoutubetv got 10 wickets in the first game, broke the test match in Chennai. He's got 7 or 6 in the second game, and then he got about 6 in the third one. And after that, Shafiqkhanyoutubetv never looked back. So, in my opinion, he's the best off spinner I've seen in the world.
opportunity for every youngster who loves skateboarding if he gets the opportunity to go and visit his coaching in India. Benefit a lot out of it. I wish all the guys and start getting this So, what caught my ear is not this gentleman is only innovative. Akram said one thing, I don't know if you all heard it, super fit. And I think yesterday he was saying that to all the youngsters. You have to work on your fitness. And I'm repeating that, and I think I repeated over the years. I'm repeating what Mr. Scrammerstock said. If you want to play cricket, you got to be super fit. And give him a big hand of applause for what he's done for cricket and what he's done here in the U.S. so far and across the nation. So next, I would like to our second guest, Kamran Akmal. We've seen so many little masters, Hanif Muhammad, Sachin Tendulkar, and I think he's one of a young, little master in batting, and you have seen his explosive batting in not only in Test cricket, one-day cricket, and also T20 across the globe. Whether it was a CPL, whether it was a PSL, whether it was a league in Bangladesh, across wherever he played. I think he played so many beautiful innings. He had won so many games for any team that he represented. So we wrote a little biography about Kamran, so let's watch that.
now watch him explode with the bat. Thank you both, Clan and Common, for such an entertainment you have provided over the years. And Common, we wish you all the best in the future endeavors. And can I get the lights, please? And now I have the honor to call upon Mr. Zain Jeevanji to come up here and have a few words with our guests. And maybe we'll take some questions from the audience as well. पहले तो बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया कि आपने Does anybody who doesn't understand Hindi or Urdu? You don't? You do. Anybody doesn't understand, so I can do it in Urdu. I feel more comfortable speaking Urdu. If anybody wants English, I can do both. My English is not as good as my Urdu, so हाँ उर्दू ठीक है पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हाँ पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं मेरे ख्याल में कितनी रात जाग जाग की जो खुशियाँ दी हैं आपने आप दोनों ने तो आपका शुक्रिया आपने जो खिदमत पाकिस्तान के लिए की उसके लिए तो मुझे मैं पहले आपसे कामरान भाई आपसे ये बताएं कि यहाँ यूएस में आप पहली दफ़ा आए कोई इस तरह कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम देखा जिसमें एक प्लेयर आता है और हर शहर पर जाके एक शहर में जाके कोच करें जी ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा कोई 5-6 साल से मैं आ रहा हूँ एवरी ईयर 4 to 5 टाइम आता हूँ यूएस में और फुली क्रेडिट देता हूँ यूएस क्रिकेट वर्ल्ड को और शफीक खान को जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया ये बच्चे आए हुए हैं उनके पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे कैंप किया बड़ा एंजॉय किया बच्चे बड़े टैलेंट है और जैसे सकी भाई हमारे साथ हैं मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यूएस क्रिकेट के लिए भी इन बच्चों के लिए भी कि इनके साथ काम करें जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने इनसे सीखा खेल के इनके साथ वो अपना शेयर किया तो बड़ा अच्छा और ये काम मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था कि इस वक्त तक टीम जैसे अफ़गानिस्तान की खड़ी हुई है वैसी टीम यहाँ की बन जाती तो लेट आए नेवर माइंड लेकिन जो काम कर रहे हैं यूएस क्रिकेट वर्ल्ड और शफीक खान इनकी मैनेजमेंट इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ऐसे बच्चे टैलेंट जैसे हम लोगों को जो 4 बच्चे मैंने कल देखे हैं विकेट कीपर्स हैं नाम तो मुझे याद नहीं है एक तो बैठा हुआ है एक विकेट कीपर है तो यही चीज़ें हैं मेरे ख्याल से ऐसे कैंप्स लगे रहेंगे फुल टाइम क्रिकेट होती रहेगी यहाँ पे ऐसे कैंप और ऐसे प्लेयर्स आते रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर ब्राइट है यूएस क्रिकेट का ये दूसरा था ये तीसरा था तो यानी जब कोई आदमी नई किस्म की बॉलिंग ईजाद करता है चूँकि 200 साल से 300 साल से क्रिकेट चल रही है
नई इजाद करें, तो किस तरह आपने सोच के कहा कि ये क्या, ये कोई एक गलत बॉल गिर गई, आपने कहा कि ये करना शुरू कर दो? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि गलत गेंद गिर गई और आपने समझा कि ये समय ऐसे होता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान है बड़ा स्पेशल है, इंसान को ऊपर वाले ने बड़ा स्पेशल बनाया। मैं जब छोटा होता था तो कहानियाँ सुनता था कि यार चाँद पे चला गया इंसान, हवा में उड़ा है इंसान जहाज़ में, फिर वो पानी के नीचे चले गए अंडर द वाटर समुद्र में। तो ये सारी चीज़ें सोचता, मैंने कहा यार इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं मैं क्रिकेट में कोई ऐसी चीज़ करूँ जो डिफरेंट हो, ये जितना भी जो कुछ आया हुआ है इससे कोई मुख्तलिफ हो जाए। तो मैं सोचता था कि कोई नई चीज़ हो, और मैं फिर दुआ करता था रात को सोने से पहले, और जब मैं खेलता था तब भी दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ दे जो दुनिया में किसी के पास ना हो। तो घंटों छत के ऊपर अपने घर की टेबल टेनिस बॉल जो पिंग पोंग बॉल होता है उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करता रहता, और आई थिंक गालिबन 2 साल तक एक्सपेरिमेंट करता रहा। मुझे सब पता था कि ये लेग स्पिन ऐसे होती है, गूगली ऐसे होगा, ऑफ स्पिन ऐसे होगा। इवन ये जो कैरम बॉल अजंता मेंडस अश्विन ने किया, मैं उस वक्त वो भी कर लेता था। फिर टेनिस बॉल से भी करता था इन दी एज ऑफ आई थिंक प्रॉब्ली 10-11, छत पे ही कैरम बॉल भी गेंद करता था छोटे गेंद से। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता था। कैरम बॉल बल्कि इनफैक्ट क्रिकेट बॉल से करने की कोशिश की तो मेरी उंगली में फ्रैक्चर हो गया, मैंने वो छोड़ दी। मगर 2 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद जो है मुझे दूसरा एक डिलीवरी थी, वो छत पे ही इजाद हुई। फिर उसको टेबल टेनिस से टेनिस बॉल, टेनिस से टेप टेनिस बॉल, टेप टेनिस से क्रिकेट बॉल। और जब क्रिकेट बॉल से करता था तो मेरे से होता नहीं था। तो ये जितनी भी ड्रिल्स बच्चों से, कल भी मैं कह रहा था कि तुम छोटे डिस्टेंस से शुरू करो, तो ये मैंने की थी। मैं छोटे डिस्टेंस से भी शुरू किया, फिर मैंने देखा कि मेरे मसल डेवलप नहीं है, तो मैं खुद ही एक्सरसाइज सोचता था कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ जो कि मेरे शोल्डर के इस मसल को स्ट्रॉन्ग कर दे। और बॉलिंग करते हुए पता होता था कि यार ये मुझे टांगों में जान नहीं है, या काफ मसल सही नहीं है, बैक ऑफ द शोल्डर सही नहीं है। तो वो खुद ही कोई एक्सरसाइज सोचता था, फिर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता था। तो कुछ महीने के बाद पता चलता था कि यार इस एक्सरसाइज से इस बॉल की इस डिलीवरी को फ़ायदा हो। तो क्रिएटिव माइंड हो, सोचो कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने कुछ डिफरेंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये इंसान जो है ये कमाल है, हमने अपने आप को डिवैल्यू किया हुआ। इमेजिन करो कि इंसान क्या क्या कुछ कर सकता है और क्या क्या कुछ हुआ होगा। तो क्रिकेट के अंदर मैं जब कोचिंग में करता हूँ तो 5 आउट करना मुश्किल है या चांद पे जाना मुश्किल है। तो बच्चे कहते हैं चांद पे जाना मुश्किल है, पता नहीं कितने साल लगे और 5 आउट करना मुश्किल है। तो अगर आप उसको अपने आप को इस तरह सोचोगे तो आपको खुद ब खुद पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे और आप जो चाहोगे वो कर लो। हम आपको एक बात के यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हम सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, तो चूँकि जगह ऐसी है, आपको एलिवेशन का चांस मिलता है, आपको तरक्की का चांस मिलता है, कोई आपको आगे पीछे नहीं पूछता, आप बढ़ सकते हैं। आप उस दौर में क्रिकेट में आए जब मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रूज थोड़ा सा नीचे जाने लगा था, लीडरशिप में भी प्रॉब्लम्स थी। ये चैलेंजिंग था कि आपके लिए कि इतना टैलेंट, और आप उस दौर में आए कि आपको पूरा फ़ायदा नहीं उठाया पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान को, मुल्क को पूरा पॉसिबिलिटी मिली आपकी टैलेंट उस एरा में आया था। जिस एरे में मैं आया हूँ तो मेरे ख्याल से उस टाइम मोइन भाई और राशिद भाई रेगुलर थे। और जितनी उनकी परफॉर्मेंस है मेरे आइडियल भी है, मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मुझे तो अंडर 19 पाकिस्तान नहीं खिलाते थे, क्योंकि वो हुमायूं भाई खेल जाते थे, शकील होता था वो खेल जाता था। तो मुझे तो कोई मैच पाकिस्तान का जूनियर लेवल पे भी नहीं खेला, सिवाय अंडर 15 के। तो बस अपनी मेहनत नहीं मैंने छोड़ी, फोकस नहीं छोड़ा। जो एक एम था उसमें मैं हर जगह कहता हूँ वो मेरे पेरेंट्स थे, जिन्होंने, मेरे वालिद साहब थे जिन्होंने मुझसे काम लिया, मुझसे मेहनत करवाई, मुझे सपोर्ट किया पूरा। जैसे ये आए हुए मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो ये टाइम इनके लिए बड़ा लकी है, कैसे कैंप इनको मिल रहे हैं। उस वक्त तो हम इनको जंगले के बाहरी स्टेडियम के देखते थे, अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं होती थी। तो ऐसे वसीम भाई के साथ, विकी भाई के अंडर, वकार भाई की कैप्टनसी में खेलना, इंजी भाई के साथ खेलना, उस टीम में बड़ा मुश्किल था एज ए विकेट कीपर खेलना। तो बड़ी मेरे ख्याल से खुशी की बात थी मेरे लिए। बस मैंने अपनी डोमेस्टिक और अपनी क्रिकेट को फोकस बनाया, मेहनत की, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, फैमिली की दुआएं थी। तो यही चीज़ है, मेहनत मेरे ख्याल से जितनी करेंगे अल्लाह उतना मेरे ख्याल से नवाजेगा आप लोगों को। और मेरे अभी भी
मेहनत कंटिन्यू रखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन ये है कि इन बच्चों के लिए हम आए हैं और इनको चाहिए कि पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते रहे हैं तो अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है उनकी दुआओं से। तो रिक्वेस्ट यही है पूरे यूएस को कि अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें, क्रिकेट की तरफ लाएं। इस काम के लिए हम लोग आए हैं। जो एक काम किया है शफीक खान ने यूएस क्रिकेट वर्ल्ड ने, तो मेरे ख्याल से इनकी मेहनत रायगा नहीं जानी चाहिए। इंशाल्लाह इसका फल ज़रूर यूएस क्रिकेट वर्ल्ड अमेरिका की क्रिकेट को देगा। एक आखिरी सवाल और फिर उसके बाद खाना भी पड़ा है और चीज़ें भी। सिकंदर भाई आपने it's important to understand that he has coached England, Australia, the teams that the world's greatest teams he's coached, सबको कोच किया हुआ है इन्होंने। ये आज आपके पास मौका है कि इनसे you're very fortunate, the younger generation that's sitting here that has got coaching lessons. तो आप आपने बड़ी बड़ी टीमों, बड़े बड़े प्लेयर्स को कोच किया। यहाँ टैलेंट देख के, और आप पाकिस्तान में भी देखते होंगे, इंग्लैंड में भी देखते होंगे यंगस्टर्स की, किस लेवल पर आप सोचते हैं डिफरेंस होगा? और बिल्कुल ऑनेस्ट, हाँ जी, बिल्कुल ऑनेस्ट ही जवाब देना चाहिए। हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट नज़र आए जितने भी इस टूर पे मैंने देखे हैं। माना ये यूएस में है, इनको उस तरह की क्रिकेट तो नहीं मिलती जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में मिलती है, मगर इनमें बहुत पोटेंशियल है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अनफॉर्चुनेटली एक तो पूरा साल नहीं खेल सकते। हमारे वहाँ तो हर इवनिंग हम क्रिकेट खेलते हैं। मैं कॉलेज में था तो हम लोग महीने में 20 मैच खेलते थे। ग्राउंड खुद बनाते थे, पिच खुद प्रिपेयर करते थे, रोलर पिच के ऊपर चलाना वो भी खुद ही करते थे। 20 मैच खेलते थे, 10 दिन बीच में जो है उसमें भी हमारी प्रैक्टिस होती थी। तो 30 के 30 दिन क्रिकेट होती थी। टूर्नामेंट से पहले ये प्रिपरेशन होती थी। स्किल वाइज ये सारे बहुत अच्छे बच्चे, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल, वेरी क्विक लर्नर। जैसे अभी आपने इमरान भाई ने कहा 15 मिनट के अंदर ही, मेरा कमाल थोड़ी है। मैंने एक चीज़ देखी, मैंने उसको कहा क्या तुम कर सकते हो, उसने 15 मिनट में कर दिया। तो मुझे कहीं और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कहीं और टेक्निकल चीज़ों को छेड़ूँ या देखूँ या जांचूँ या उनको खोलने की कोशिश करूँ। मुझे तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करने दिया उस बच्चे ने। 15 मिनट के अंदर जो है उसने पिक कर ली थी। उसका मतलब ये है कि दे आर वेरी क्विक लर्नर और इनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। बट अब ये है कि इनको कितनी क्रिकेट मिलती है। और मैं ये समझता हूँ वाकई कामी ने जो कहा, टोटली एग्री, 100%। यू ऑल आर वेरी लकी। वी मस्ट से थैंक्स टू यूएसए क्रिकेट वर्ल्ड, स्पेशली शफीक खान, कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हम लोग यहाँ पे आए और आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स से मिलने। यकीन करें हमें वाकई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। क्रेडिट टू मिस्टर शफीक, एंड आई थिंक यू ऑल शुड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी क्विकली। some 20 years from now when the American team will be playing in the World Cup, and we'll have to thank Shafiq Saab for that, I guess. Abrar Saab, can I call you up and you can take the podium back? Don't give me a chance to talk anymore. I was hoping Zanbhai would stay here a little longer. I could take a breath. Thank you, Zanbhai, and thank you, Squan and Kamran. I know you're all hungry. At least I am. And a couple of friends that I know they're really hungry. I can't mention their names. So I would like to introduce the person who's behind this innovative idea that Carmen mentioned, that this hasn't happened before and it should have happened 15 years ago, right? And I think there were some attempts made. I think you can call me a historian on cricket in the US. I've been, getting my feet dirty, getting my knees banged, and my fingers hurt because of cricket, and since 1984. Okay. It's like any passion for the sport, right? I think these youngsters are very fortunate that their parents are supporting them. Just like Kamran was, his dad supported him to become and I think the key that you heard from both of these gentlemen is commitment and fitness.
And the other thing is listen. Not only to your coaches, your parents, especially. Like Sklanbhai mentioned yesterday, I'm sure I'm going to ask him to say a few words so that I know we talked in Urdu, and I would like to ask him later to have a few words for the youngsters. And not only the youngsters, but I see some adult players here that can probably benefit from that as well. Because I know when I'm in the field, I'm very hard on the guys, but sometimes they think, oh, that old man, he doesn't know, right? I can hit a 6, but that's all they can do in a whole inning, right? And then they're sitting outside for the rest of the 49 overs while I'm batting there for 25 overs, right? So I think that you will learn something that you can apply not only in cricket but in life. Going back to the gentleman who's behind this and the organization, USA Cricket World, we appreciate their initiative. This is not where we're going to stop. This is we're just scraping at earth right now. And we want to go much deeper than this. I think Cricket World's vision is much broader. So I don't want to speak for that, and I think the best person, the person behind it is Shafiq Khan. I would like to have him come up here and give us a vision of USA Cricket World and where we're going to go from here. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीक डेज में बड़ी बात है कि मंडे को इस तमाम फैमिली बच्चे सब तशरीफ़ लाएँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो कल तशरीफ़ लेके आए थे। कल तकरीबन 16 बच्चे हमारे पास आए। एक्सपेक्ट हम 116 कर रहे थे, मगर लकीली से 16 हमारे पास आए। और ये 16 नहीं थे, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। अल्हम्दुलिल्लाह 16 डायमंड हमें कल मिले हैं। ख़ासकर उस बच्चे को मैं देखे जा रहा हूँ कि जिसने जो कल परफॉर्मेंस दी है, इससे मेरे मेहमान भी इतने मुतासिर हैं। और भाई गोरों को क्रिकेट सिखाते हैं तो देख लें किस लेवल का है, और उन्होंने ऐसे डायमंड यहाँ से निकाले हैं। ये अच्छा, ये हमारे 10 कैंप हैं न्यूयॉर्क से लेके LA तक। तो दूसरा कैंप हमारा जो था, पहला कैंप न्यूयॉर्क में था, दूसरा कैंप न्यू जर्सी में था। न्यू जर्सी में भी जो बच्चे आए थे हम उनसे बड़े मुतासिर हुए। मगर कल जो यहाँ कैंपिंग हुई है, यहाँ कोचिंग जो हुई है, तो ये आप लोग नंबर ले गए सबसे। सान फ्रांसिस्को के बच्चे 1 नंबर पे आए। हमारे मेहमान कल जब कैंप ख़त्म हो उससे लेकर आखिर तक हमारी यही तारीफ़ें हो रही थी। और इब्रार भाई जो हमारे ख़ास मेन दोस्त भी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी यही कहे जा रहे थे कि यार इन मेहमानों से यही बातें हो रही थी कि सान फ्रांसिस्को में तो भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी आप ये इतने सीरियस हैं। ख़ासकर जो पेरेंट्स पीछे खड़े हुए हैं, और जब उनसे हमारी मीटिंग्स हुई वो कह रहे हैं भाई आप हमें इन बच्चों को आके लेके जाएं। और हम चाह रहे हैं फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम भी यही था कि मैं खुद 25 साल से न्यूयॉर्क में रहता हूँ, 25 साल से खेल भी रहा हूँ। मैंने कोई इतने बड़े लेवल पर क्रिकेट नहीं खेली, बस जिस लेवल पर भी खेली है, मगर हम सब जो यहाँ बैठे हुए हम सब क्रिकेट लवर हैं। हम इस जुनून तक इस गेम से प्यार करते हैं। और फिर जो जैसे कामी भाई ने कहा कि आज से 15 साल पहले ये कैंप होना चाहिए था, आप यकीन करें कि 15 साल पहले भी ये ख्याल दिल में आया था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये $1.5-2 लाख लगाऊं या ना लगाऊं। और फिर कोशिश की और ये पूरा ट्रिप जो 27-28 दिन का ये प्लान किया। और वक्त के इन राइट नाउ एशिया के सबसे बड़े कोच और इतने बड़े प्लेयरों को फर्स्ट टाइम लेके आना, ये हम छोटा भी स्टार्ट ले सकते थे, मगर उसके इतने असरात ना होते। इसलिए कि मैं खुद तो इतना नहीं खेला हूँ कि मैं आगे इनका टैलेंट देखूँ और मैं कुछ सेलेक्ट करूँ। लिहाजा मैंने एक ऐसी टीम जोड़ी कि जो बैटिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, कीपिंग के हवाले से और जो दूसरी टेक्निक होती है उस हवाले से वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो एक ताली होनी चाहिए इनके लिए कि ये वो कोच हैं शकील भाई कि जिन्होंने इनके स्टूडेंट जो हैं आज मुख्तलिफ मुल्कों में खेल रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा जो टेस्ट कंट्रीज हैं 10-12 उसके अंदर इनके स्टूडेंट खेल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया। और मुझे जो ये आज हमारा 8वां कैंप था, यानी आज 8वां सिटी था, जो मुझे रिस्पांस मिला, जो बच्चे सामने आए हैं, इसको देखते हुए हम 3 महीने बाद दोबारा इंशाल्लाह वापस फिर आ रहे हैं। और
उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट कोचेस को भी लेके आए जो इंटरनेशनल लेवल के हों, खासकर इंडिया से हमारे कोच ज़रूर साथ आएंगे, इसलिए कि 90%, 95% हमने देखा कि जितने बच्चे थे वो ज़्यादातर इंडियन बच्चे आए हैं। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। मैंने क्रिकेट सिर्फ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी तक खेली, इसलिए कि हमारे क्रिकेट बहुत ज़्यादा है उस तरफ। हालांकि हमारे सिर्फ 5-6 महीने क्रिकेट होती है, बाकी में स्लो वगैरह होती है, बट जो रिस्पॉन्स हमें यहाँ से मिला, जितना टैलेंट हमें यहाँ नज़र आया, ये हमारे उस तरफ वहाँ नहीं है। तो ये आप सब इस के लायक हैं कि हमें दोबारा आना पड़ेगा। मैं जब भी कैंप लेके आऊँगा इंशाल्लाह सैन फ्रांसिस्को में, ये यहाँ हम ज़रूर कैंप लगाएंगे। बाकी ये कि भाई क्रिकेट प्रमोट करना मकसद में यही है, और ऐसे डायमंड यहाँ से लेके इनको आगे लेके जाना। देखें जब मैं खेला हूँ, मैंने 90 में हाई स्कूल किया, तो मुझे याद है कि जावेद मेदाद भाई हमारे स्कूल आए थे, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लेजेंड हैं बैटिंग के हवाले से। उन्होंने हमें 10-15 मिनट वहाँ थोड़ी सी टेक्निक वगैरह बताई थी। मैं आज भी 30-32 साल बाद ये चीज़ फील करता हूँ। तो इन बच्चों को कल 5-6 घंटे का टाइम मिला, बल्कि इसके आसपास, तो ये इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, और ये चांस हमें नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि आप लोग दोबारा हमसे रब्ता करें, जो आप लोग जो सीरियस हैं, अगर अपने बच्चों को क्रिकेट सिखाना चाहते हैं, भाई कोई इसमें बुराई नहीं है, आप डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्रिकेट प्लेइंग कंट्री में जाना पड़ेगा। तो राइट नाउ इनकी एकेडमी है, सकन मुश्ताक क्रिकेट अकेडमी इंग्लैंड में। अगर आप चाहते हैं हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान करते हैं अपने जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिहाज से, और फिर एक महीने का ट्रिप बन सकता है, वीक का, 2 वीक का, जो भी होगा वो आपसे पूरा सकन भाई जो है उसको पूरे ग्रुप को बनाएंगे। और मुख्तलिफ स्टेटों से हमें 8 सिटी से बच्चे, हर सिटी से हमें 2-3 बच्चे ऐसे आउटस्टैंडिंग मिले हैं जिनसे अब हम राब्ते में हैं। तो प्लीज़ यूएसए क्रिकेट वर्ल्ड जो है इसको आप फॉलो करते रहें, फेसबुक पे यूएसए को फॉलो करते रहें। जो भी हमारा प्लान होगा, हमारे नंबर कॉन्टेक्ट हमारे पास है, नहीं तो अपना इब्रार में बैठे हैं, इनसे रब्ता कीजिएगा। तो ये तो फ्यूचर के प्लान हमारे हैं। और उसके अलावा आप सबका दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और प्लीज़ गेम को सिर्फ वीकेंड में ना रखें, इसको आगे फैलाएं। माना कि यहाँ क्रिकेट दबी हुई है बेसबॉल की वजह से या किसी और गेम की वजह से, क्रिकेट प्लेइंग कंट्री नहीं है, मगर यकीन करें कि जिस तरह अफगानिस्तान की टीम ने और बांग्लादेश की टीम ने पिछले 10-15 सालों में जितने बेहतर बन के ऊपर सामने आए हैं, तो यूएस की टीम में इतनी पावर है। इन बच्चों को देखते हुए हमें 10-15 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, शायद 10-15 महीने ही वेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। बाकी जितने लीग्स हैं अब उसे फिर उन्होंने अपने अकाउंट से मिलियंस में, इनके ट्विटर के और फेसबुक के अकाउंट, वहाँ से उसको आगे हमें अनाउंस किया कि इसकी हेल्प की जाए। पहले उसका बच्चे का टेस्ट तो लो किस काबिल हो। तो ये हमें भी छोटा सा क्रेडिट जाता है कि हमने इस 8 कैंपों के अंदर से ही नहीं कि वो पहले कैंप में आया, उसके बाद हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। उसके मैसेजेस देखें, इतने लंबे चौड़े उसने ईमेल भेजे, में शुक्रिया किया, और इतना खुश है वो बच्चा। तो हमें ये खुशी हो रही कल जब ये 18 बच्चे वहाँ पे आए खेले। आप यकीन करें हम आपको बता नहीं सकते, हमें अपना बचपना याद आ रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ये नहीं कि अगर यूसाको कर रही है या कोई दूसरा ग्रुप ही कर रहा है, जैसे इब्रार भाई हैं पिछले 30-35 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके बड़े भाई डॉक्टर साहब क्रिकेट के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी है। तो इस किस्म की बहुत, आप सब भी जो बैठे हैं इस वक्त, ये वीक डेज में आके आप सब क्रिकेट को प्यार करने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इंशाल्लाह 2-3 महीने बाद और भी क्रिकेटर नजर आएंगे, खासकर आपको इंडियन प्लेयर नजर आएंगे, हम उन्हें लेके आ रहे हैं। सकी भाई से हमारी कंटिन्यूस प्रोग्राम के बाद हमारी मीटिंग होती, कोचिंग कैंप के बाद। हम ये घूमने के लिए नहीं आए हुए, और ये सब कुछ ये मेहमान इन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है। हमें सब दोस्त ऑफर करते हैं चलें घूम के आते हैं, डाउनटाउन जाते हैं, तो ये हम बैठ के प्लानिंग करते रहते हैं क्या मिसिंग, कोचिंग कैंप में क्या मिसिंग थी, हमें क्या मिला, किस बच्चे में कितना टैलेंट था, किस तरह उसके साथ काम किया जाए। तो ये सारी चीज़ हम करते रहते हैं। इंशाल्लाह आपको चंद महीनों बाद चीज़ें नजर आएंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमें फॉलो करते रहे, सपोर्ट करते रहे काइंडली। The food is there. I think there are a couple of items that they're going to bring. So let's take care of the shirt, and then we'll grab the food. So the youngsters that were probably not able to understand some of the Urdu Hindi mixture there. So I just want to, few points I want to say in English so you know that USA Cricket World has a vision for future for the youngsters. What their plan is, the students, they saw 3 to 4 students in each camp across the nation that were extraordinary talent, right? All of you that participated yesterday or from New York all the way down to here have talent. You love the game, you have skill, right? So there's always some kids that are above others,
And their vision is to, in the future, to get those youngsters together and put a team together that can, like Shafiq mentioned, maybe tour England, tour other countries. Okay? They have a bigger vision for that. So I just wanted to make sure that some of you that don't understand Urdu that know what was said. So I would like to take an opportunity to appreciate and thank our few sponsors. We have VStreamU that provided us that's our media partner for San Francisco Bay Area. They've done a lot of work in the background promoting this event, and I'd like to thank Umar Ali for his effort. Thank you, Umar. Pro Crick Shop, they gave us the facility at no cost, and that's a huge relief for us. You all know that go over there, you know what it costs to go and play there for about an hour, but that was really good for them to come forward and support youth cricket, and I hope you will continue to support them. And if you're touring, you're a visitor, or you don't have insurance, right? So our great sponsor, and also not only a sponsor, the person who actually guides us step by step through these processes to get us where we are today, and we're counting on this individual and this organization for the future support as well to guide us, because as you know, that one or two people cannot make a difference. It's a team effort. So there are people who behind the scene that do effort. I'm standing here, it's not my effort. It's the people who are behind me, guiding me, pushing me, encouraging me, giving me a hope and confidence to move forward and continue to do the good work. And thank you, Jan Zivanji, Jivanji Insurance. Thank you, sir, for all your support and guidance, and we appreciate it. We have some certificates for all the students that participated yesterday. So I'm going to call Mr. Vineet Kataria, and if I can ask Mr. Sklan Mushtaq to hand some of the certificates, then I'll bother Kamara Kamala if you guys want to come together. That's even better. So I'm going to have Vineet Bhai call out the names, and I will be the middleman because I get commission right now. So first of all, is Daras Raisinghani. Aryan Chaudhary. Pratham Kataria. Juan Saeed. Next up is Manav Rana. Avriti Kataria. Danika Raisinghani.
Samson Bhatti. Then we have a few other kids who could be here. Nishesh, Shreyans, Madhav, Karan, Gurman, Rahul Jariwala, Jay Sonawala, Uday Patel, Jiten Saini, Alak Kapadia, Arya Mansuri, Om Patel, and Dushyant Singh. Thank you. Thank you, Skyby. Thank you. I appreciate it. So, you saw some of the youngsters that were here. A young lady here, when she actually mentioned it to me yesterday during a coaching session. When Kamran was helping some of the young wicket keeper, and I could tell you, those kids have talent. They have talent. She came to me and she goes, she likes wicket keeping. She goes, "Right, uncle, I think I need more time with this gentleman. I need to learn more wicket keeping." I said, "We'll do it next time, inshallah." All right, so we'll next time he comes, you'll be over there. Okay, so thank you for all the youngsters for participating and the parents for supporting. We have, before I go to our money-making scheme, so I'm going to ask Glenn to say a few words to the crowd and the youngsters related to cricket, how they can go from where they are today, whether they are a youngster or they're adult players. And I think Glenn saw some challenges yesterday with the youngsters. And Glenn, let me assure you, the same challenges are present in the adult players. So you can sum it up from there. I think when we were talking about question and answers, we just had question and answers, and I mentioned that how I actually win the Dusra. In life there is no shortcut. If you want to become successful, you have to work hard. We have to have the passion. We have to have the love for the game. Like yesterday, I asked to all the kids that, do you like cricket or do you love cricket? And everybody said, we love cricket. We have to have that love if you want to become successful in cricket or in your life. You've got to have the passion, the love, and you have to enjoy as well. 3 things, I always say that. If you have love, passion, and you are enjoying, trust me, you are going in the right direction. You won't fail. You will become successful. What happens when you start losing enjoyment and love and passion decreasing? Then the problem comes. You will learn definitely, you will succeed definitely if you have these 3 qualities: love, passion, and enjoyment. These qualities will actually prepare you to work hard. We always say, you have to work hard, you have to work hard, you have to work hard. But if you are not enjoying, you won't work hard. If you don't have passion or love, you won't work hard. So you have to have love, passion, and enjoyment. One little, sorry, forgot your name, Avridi. She asked me, what actually motivated you? What is the thing that motivated you to play cricket? And I said to her, when I used to watch cricket, I used to see my heroes. They used to make runs and wickets, and the crowd, they used to clap for his good shot or taking wicket. They used to stand for him. They used to praise, and obviously your news are coming into the newspaper and TV, and then you are going and seeing the world
making friends all over the world. These things used to make me motivated, you know. You need something to motivate you. And I'm sure why you guys are playing cricket, because you love cricket, and if you love cricket, definitely you watch cricket as well. When you watch cricket, watch your heroes, watch your favorite players. They will motivate you. Definitely they will motivate you. And try and read their life, their story, and you will see that a lot of hardship, a lot of hard work, a lot of sacrifice. It's not that, you know, you just woke up and walk in straight into the national team and started scoring runs and taking wickets. No. But you must watch your favorite heroes, your role models. You get all the inspiration from them. And when I was little, I used to watch. And we always learn while watching, listening, talking, playing, asking. We learn. Anyone, when we win, we learn, we lose, we learn. I always give example. I used to live in London, and I used to see the car used to have L plate in the back. L plate. And I was new. And I never knew that why this is L is written behind, you know, on the back side of the car. One day somebody said that he's a learner. And when I used to drive, everybody used to give me a horn, because I came from Pakistan and I used to drive, you know, roughly. Because in Pakistan, you don't follow the signals and signs, and you just, you know, you just move your car right and left and center, you know, you just drive. You don't know the speed limit at all, you know. Wherever you see there's a gap, you just go in. So back in 96, 97, when I joined Surrey, you know, when I was driving like that, everybody used to give me the horn and used to shout, and I thought, why is shouting at me? And one day, one of my colleagues, he was sitting next to me and he said that, Saki, you are driving wrong. You have to follow your lane. If you're going left, you need to give the signal, then go left. If you want to go right, give the right signal, you know. This is the speed limit, there are the cameras and everything, you have to follow the rules. I said, nobody taught me. In Pakistan, you just drive. And then one day when I saw the car having L plate, then I went to the dressing room, I asked my Surrey mates, I said, I saw one car having an L plate on the back. They say he's a learner. I said, okay. But he wasn't giving any signal, he was driving badly, and nobody was giving horn to him. He said, he's a learner. And I thought, okay, this is a good information you gave it to me. What I did, I bought an L plate. Trust me, it's a true story. For a few months, I put the L plate back of my car, and I was driving in London. Nobody was giving on to me. I said, I got the solution now. And then, you know, I realized that, you know, if you are a learner, everybody will look after you, everybody will give you away, nobody will harsh on you, nobody will be angry on you, everybody will help you, and you will reach your destiny safely and easily. I learned a lesson from there. So I'm sure there is a message in that story. What is the message? You are a learner. You are a learner. If you are a learner, trust me, you will get everything. If you're not a learner, I know everything, you won't learn. So you learn while losing, winning, talking, watching, listening, practicing. You learn in your life. So please put L plate here or here and keep learning. And I'm learning too. Yeah? Yeah, I'm learning too. God bless you all. I'm sure all those little superstars, they are very hungry. And I'm hungry too. Thank you very much. And I'm a little superstar too. All right, I think I heard it loud and clear because the stomachs are growling.
So we're gonna do a little change of plan. Food is actually on the way, if you can bear with me for a little bit of time. But it's interesting that Sklanbai mentioned driving, right? But when he bowled, he never let anybody drive. So that was like, wondering now if he was letting people drive on the road or not. So we're gonna move on to, we're gonna get stuff done, and then, you know, when the food comes, we might take a break, because I think when you guys are fed and happy, you guys will be easy to reach into your pockets and wallets, right? But, you know, it's not too far away. If you're hungry, you can reach still, you know. It's probably either up here, a pocket, or, you know, your purse. I think it's right there. So let's get going. So we have a few items here that you see that we would like to auction to offset